बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनाबिया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग टारगेट पेपर फॉर 2024, राइट। तो ये मैंने चैप्टर वाइज डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के कोई क्यूरीज रह ना जाए, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज है ये, ठीक है। कमर्शियल बैंक का है हमारे पास। सबसे पहले डिफाइन बैंक विथ 3 रेफरेंस डेफिनेशंस, ऑलराइट। उसके बाद है हमारे पास लिस्ट द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। डिफरेंस बिटवीन scheduled and non-scheduled bank. Describe the primary functions of a commercial bank. Describe the forms of advancing money to its customer by a commercial bank. And list the kinds of uh, banks by ownership and explain any 3 of them. And list the kinds of bank by functions and explain any 3 of them. ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इसकी 3 टाइप्स लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाइलाइटर चेंज कर देती हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ग्रीन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास एंड लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, डिस्क्राइब करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, list the steps involved in the opening of a bank account. For businessman and salaried person, which account is better and why? Under what circumstances can a bank account be closed? Factors of closing a bank. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से। Describe any 5 essential bills of exchange. Describe differences between bills of exchange and promissory note. Define bills of exchange and draw its specimen. In which 2 ways a bill of exchange can be dishonored. Define bills of exchange and states its parties. State the kinds of bills of exchange and explain any 3 of them. ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट से, एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है चेक, इससे हमारे पास है क्वेश्चंस, डिफाइन check and explain its parties. Difference between stale check and post-dated check. Give any 5 differences between check and bills of exchange. When does a bank dishonor a check? Describe any 5 conditions. List the reasons for dishonoring a check. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, एक्सप्लेन स्पेशल क्रॉसिंग, डिफाइन चेक एंड write its essentials. Why is a check called a credit instrument? Define check and bills of exchange as has been written in the Law Negotiable Instrument Act 1881. List the kinds of check and explain cross check, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, तो इससे है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इससे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लिस्ट इट्स वेरियस काइंड्स, डिफाइन एलसी एंड एक्सप्लेन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक एडवांसेस एंड फंड्स। तो यहाँ से हमारे पास फॉलोइंग क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, and list the principles of employing a bank's fund, describe the principle of profitability, and list the 5 C's of credit management and explain any one of them. List the 5 factors of the amount of cash till cash requirement of a commercial bank. Write the sources of short term finance, right? उसके बाद हमारे पास endorsement से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Describe the 2 types of endorsement. Define endorsement and describe general and special endorsement. Define endorsement and explain conditional endorsement. इसकी टाइप है
What is meant by endorsement? Describe its kinds. ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक से. Enlist the functions of central bank and explain the lender of the last resort. Which method of issuing currency notes is adopted in Pakistan? How does the central bank acts as a banker to the government? Explain clearing house facility. Enlist the qualitative methods of credit control and describe bank rate policy. Describe any two quantitative methods of credit control. Describe the relationship of scheduled banks with the State Bank of Pakistan. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड से. Define balance of trade and balance of payment. Mention the measures for correcting. Mention the measures for correcting BOP and explain any one of them. उसके बाद हमारे पास है foreign exchange से. What are the various method tools for foreign remittance? Explain any two of them. Explain the objective of exchange control. Mention the factors that affect the exchange rate. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई बैंकिंग से, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है. Define online banking and describe its importance. Write any 3 advantages of e-banking. Describe the methods or tools used in e-banking. Describe any 2 services of e-banking. Miscellaneous question में है prepare a list of lending institutions and explain any one of them. ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देख सकते हैं कि हैं ये इम्पोर्टेंट. ये सही है. History and origin of bank. Functions of commercial bank. Functions of central bank. Difference between commercial and central bank. Procedure to open a bank account. Reasons for dishonoring a check. Explain in detail the kinds of check. Uses employing bank funds. Principles of lending. Difference between BOP and BOT. Explain the measures to convert unfavorable BOP into favorable BOP. Methods of credit control. 5 C's of credit management. Factors affecting exchange rate. Methods of issuing currency notes. Explain the purchasing power parity theory and describe its assumptions and limitations. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये लॉन्ग भी प्रिपेयर कर लें तो ऊपर के जो शॉर्ट मैंने डिस्कस किए हैं वो इसी में से आए हैं. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. Subscribe, like and share it with your friends. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर कोई भी आप लोगों का कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई दे सकूँ. अल्लाह हाफिज़.